Hi, welcome to GATE ESE lecture. We are in lecture number 106 and of EDC, and this is your 7th module MOSFET. Here in this video lecture we are going to discuss about a couple of note points on depletion mode MOSFET. So starting with the first point, for your depletion mode MOSFET, your drain current flows when VGS is greater than VP. We know this, we understood this from the previous graph. It will only flow, this is your VGS, it will only flow, this is your VP, this is your IDS. Okay, IDS will flow only when your voltage, your VGS voltage is greater than VP. VGS voltage is greater than VP. At that point your IDS will be flowing. So remember this point always. Okay, the second point will be pinch off voltage can be treated as threshold voltage in DMOSFET. Yes, we can call it as a threshold voltage in DMOSFET. In EMOSFET we have a voltage, this is used to be our transfer characteristics curve in EMOSFET, and this used to be the voltage at which our current production happens. After this point, up to this point our channel is got formed, and after this point carrier will start flowing, and due to which your current will start जनरेटिंग. तो ये वाला वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते थे सर? थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो हमको यहाँ पे ये वाले केस में हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, सो इसको भी हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह सकते हैं. हाँ सर, डिप्लेशन मोड मॉसफेट में हम लोग बोल सकते हैं सर पिंच ऑफ वोल्टेज टू दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज. वी कैन टेल इट सर, देयर विल बी नो प्रॉब्लम सर. हाँ, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. यू नो द सैचुरेशन का फॉर्मूला ना, जब करंट सैचुरेट हो जाता है, द सैचुरेशन करंट वैल्यू इज यूज्ड टू बी IDS इक्वल्स टू म्यू n C naught x इंटू W डिवाइडेड बाई 2L होल इंटू VGS माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज का होल स्क्वायर. ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखते थे VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का होल स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ VT नाउ आई कैन रिप्लेस VP. दिस इज योर सैचुरेशन के केस में. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस आर वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट्स, और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं. दिस इज मोर देन एनफ फॉर योर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नोट पॉइंट. ये जो चीज़ है, ये आपको बस एक ही एलिमेंट याद रखना है, बाकी के सारे सब अपने आप याद हो जाएंगे. फॉर एन चैनल डिप्लेशन मोड मॉसफेट आपका हीरो कौन है सर? -VP है सर, -VP है. तो अगर आप ये याद रख लिया तो बाकी सब आपका याद हो जाएगा. हाउ? लुक हियर केयरफुली. फॉर एन चैनल डिप्लेशन मोड मॉसफेट, your the voltage after which you'll going to generate the current value, you'll get the current value, the input voltage after which you'll get the current value, that is your -VP. In the similar way, n channel E MOSFET में क्या होगा? It is enhancement mode MOSFET के केस में. सर ये -VP है तो बस वो VP के जगह पे VT आ जाएगा सर, -VT हो जाएगा सर. हाँ, सिमिलरली एन चैनल डिप्लेशन मोड मॉसफेट में -VP है, तो पी चैनल डिप्लेशन मोड मॉसफेट में सर +VP हो जाएगा सर, +VP. हाँ, तो सिमिलरली पी चैनल एनहांसमेंट मोड मॉसफेट में सर +VT हो जाएगा सर. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ मूविंग ऑन द लास्ट पॉइंट. ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड. ई मॉसफेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ई मोड मॉसफेट और आपका एनहांसमेंट मोड मॉसफेट with VT, with threshold voltage as threshold voltage, it can be converted to depletion mode MOSFET. This enhancement mode MOSFET can be converted to your depletion mode MOSFET if you change the impurity dose. Where your change in impurity dose will be equals to C naught x, listen to this carefully, C naught x VT minus VP whole divided by E. The derivation is not in your syllabus. Now in place of VT minus VP you can write down C naught x. In place of VT minus VP you can go to write down del V divided by E. Now if you take the impurity dose this much amount, VT minus VP divided by E whole into C naught x,
then you can convert your enhancement mode MOSFET into depletion mode MOSFET. Okay, before we wind up, there is something I'd like to share with you. We put in a lot of hard work and time to prepare these materials for you. Okay, so my sincere request to you, press the like button and do subscribe to our channel GATE ESE lecture. Thank you so much for watching this video lecture. See you in the next video lecture of a beautiful analysis in the next video that we are going to do. Ki why NMOS is more preferred over PMOSFET. तो वो सारे analysis we are going to do in the next video lecture. See you in the next video lecture. Till then, bye.